मैनहट्टन वेंचर्स के संतोष राव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, गुड मॉर्निंग। इंडिया में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग देयर इन यूएस। ये अभी अभी जो न्यूज़ आई है रॉयटर्स से, हमें न्यूज़ आ रही है कि पॉसिबिलिटी है कि यूएस कुछ तरह के सैंक्शंस अब नेक्स्ट लगा दे। आपको नेक्स्ट किस तरह के स्टेप्स यहाँ से पैन आउट होते हुए नजर आ रहे हैं? आई थिंक ये तो एक सरप्राइज था। द मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग कि ये डिप्लोमेटिकली सेटल हो जाएगा, सो दैट एंड तो कल डेफिनेटली मार्केट में दिखेगा कि स्टॉक्स विल सेल ऑफ। आई थिंक वो तो नॉर्मल प्रोसेस होगा, सैंक्शंस लगेंगे और रशिया विल ऑब्जेक्ट एंड जैसे पहले भी हुआ था। इमीडिएट इम्पैक्ट तो होता नहीं है, बट आई थिंक यूरोप पे ज्यादा होने वाला है क्योंकि वो वहीं पर है। तो आई थिंक यू विल सी सम इम्पैक्ट, बट डेफिनेटली द सेंटिमेंट इज गोइंग टू चेंज एंड वॉलेटिलिटी इज गोइंग टू गो अप बिकॉज दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। द मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग some turmoil, some volatility, knowing Putin, but they thought in the end it will be a diplomatic solution. So it's a surprise. And we'll see tomorrow. We'll see a reaction. तो US markets of course आज closed थे, लेकिन futures market ये बता रहे हैं कि डाउनटिक है। इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया भी प्रेशर में आते हुए नजर आ रहे हैं। द ओनली गुड थिंग इज दैट ये जो मामला एस्केलेशन आया है, एक्शन या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट सा शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, सैंक्शन आने की बात है, दिस इज कमिंग एट अ जंक्चर जब यूएस मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स ऑलरेडी 15-20% नीचे हैं अपने रीसेंट टॉप से। डज दैट गिव यू कंफर्ट? आपको ऐसा लगता है कि शायद जो एडिशनल प्रेशर आए वो बहुत ज्यादा, मतलब फॉल्स यहां से कुशन्ड हो? क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है क्योंकि हम ऑलरेडी गिर गए? हाँ, गिरे हैं पर और भी गिर सकते हैं क्योंकि अभी आई थिंक इट जस्ट गेव अप what it had done since the beginning of January or the end of January. So or whatever gains we had in the S&P, we gave that up. तो थोड़ा और गिरेगा क्योंकि अभी भी है काफी जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है, they are still inflated, valuations are still high. So I think it's going to be a stock pickers market where you go for good high value tech names and value names like the financials and all that will do well in high interest rate environment and who have the pricing power in this inflationary environment. So I think that is where you're going to go. It's going to be a very selective market, but definitely और नीचे जा सकता है क्योंकि there is still some froth in the market. अभी पूरा गया नहीं है। संतोष जी, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। जिस तरह से आप कह रहे हैं इन्फ्लेशनरी मार्केट हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस यहाँ नज़र आ सकते हैं और यहाँ से और ज़्यादा सिचुएशन जो है इंटेंस होती हुई दिख सकती है। अब अगर डोमेस्टिक मार्केट्स की हम बात करें, वॉर लाइक सिचुएशन जैसे ही होती है हर तरफ हम देख रहे हैं एक इम्पैक्ट वहाँ पर आता हुआ पड़ रहा है। तो डोमेस्टिक मार्केट्स पर पर्टिकुलरली जिस तरह से हम देख रहे हैं बुलियन एनर्जी पैक पर उसका एक बड़ा असर पड़ता है। क्या लगता है, वॉर लाइक सिचुएशन या फिर अगर यहाँ पर ये स्थिति जो है और ज़्यादा इंटेंस होती दिखती है तो फिर डोमेस्टिकली कैसा असर पड़ेगा? डोमेस्टिकली बहुत पड़ेगा असर क्योंकि इन्फ्लेशन टू अ लॉट एक्सटेंट द मार्केट वाज डूइंग, फेड का काम कर रहा था क्योंकि मार्केट वाज, स्टॉक्स वर फॉलोइंग रादर, सो एंड द केस फॉर इंटरेस्ट रेट गोइंग अप वाज बीइंग मेड, बट शायद इतने इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ेंगे क्योंकि पहले तो एस्टिमेट्स थे कि 7 बार बढ़ाएंगे, देयर विल बी एटलीस्ट 7 रेजेस इन द 7 मीटिंग्स अहेड। तो अब लग रहा है कि 4 या 5 ही होंगे raises. So I think with that sense, I think that's good. Overall, the domestic market, the bond market is saying that the long-term inflation is not going to be that bad. So in 5 years, inflation is going to come down quite a bit. So it's not a runaway inflation atmosphere at this point. The bond market is saying that. So they're not worried yet. They feel that the soft landing that Fed chairman will do, Chairman Powell has been very good with the data-centric policies. So I think he's going to watch the market and do a soft landing, and that's what the market is expecting. They are betting. Abhi tak to they have full faith that the Fed will be very successful in landing successfully, raising rates but not causing a recession. I think that's the big equation that needs to be played out, and that they feel that Chairman Powell will do a good job at that. राइट, ओके। सो इंडियन मार्केट्स की अगर बात करें, संतोष, मुझे पता है कि आप बहुत डीपली नहीं बट एक ठीक ठाक तरीके से इंडियन मार्केट्स को देखते हैं, तो क्या
एक इन्वेस्टर को आपका व्यू, आपका क्या एडवाइस रहेगा? क्या लार्ज कैप स्टॉक्स यहाँ से 10, 15, 20% अगर नीचे आए तो देखना चाहिए? टेक्नोलॉजी या फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स जो रिलेटिव डिफेंसिव्स हैं उनको देखना चाहिए, या हाई बीटा फाइनेंशियल्स भी देख सकते हैं? एनी व्यू? Yeah, absolutely. I think pretty much the same thing as in US. I think you go for good quality names. I think they will withstand this whole turbulence, and it always does. So it's good idea to maybe wait a few days for the dust to settle, but it's a good idea to come in and selectively go into good quality tech names, good quality financials, because they succeed in an environment, in the rising interest rate environment, and commodities also because of the infrastructure play. So these are names that you have to go in. Pharmaceutical, of course, will always do well. So companies in a secular tailwind, in a secular growth areas, will continue to do well. As in US, cloud computing, cybersecurity, data analytics, data mining, these are companies that will continue to do well regardless of what's going on, because the companies are not going to stop investing there. So there are some secular growth names that you need to go into selectively. Don't go for the high beta technology names that have no profits and trading at multiples of sales that are not going to see profits for a long time. So the same theme applies in India. So it's time to reset, regrade this whole thing and be very sensible about investing. Don't chase for the speculative names. Right. All right. Santosh, thank you very much for your time. हमेशा की तरह आप हमारे साथ जुड़े और बहुत ही सेंसिबल एडवाइस हमारे व्यूअर्स को आप देते हुए नजर आए. थैंक्स वेरी मच फॉर दैट. चलिए आगे बढ़ते हैं.